Hello everyone. In this module, we will learn about cloud computing architecture. To have a deep understanding, we will see multiple reference architectures like from NIST, IBM, and Oracle. So let's start. Uh, what is a cloud computing architecture? Architecture क्या चीज होती है? Architecture is something which is actually a building block of something which is going to be a real thing. ठीक है? Architecture define करता है what are going to be the components inside a system, how they are going to be interrelated, how they are going to be built. So these are the things which we provide in an architecture. किसी भी आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए whenever you go to define a specific architecture there exists reference architectures. So reference architectures क्या होते हैं? reference architectures होता है एक किसी चीज का एक जेनेरिक मैप, एक जेनेरिक ब्लूप्रिंट which tells के जब भी हम किसी चीज को किसी सिस्टम को किसी भी एक्चुअल चीज को डेवलप करें तो उसको डेवलप करने के बाद how it's going to look like. तो उसके लिए हम पहले एक रेफरेंस आर्किटेक्चर्स भी अवेलेबल हमारे लिए होते हैं. ये रेफरेंस आर्किटेक्चर जनरली वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज या ये लोग डिफाइन करते हैं. सो सिमिलर इज इन द सॉफ्टवेयर domain as well. So in software domain we do have software reference architectures which actually gives you a template solution. और कोई भी जो आपने कोई प्रोडक्ट या सिस्टम डेवलप करना होता है उसका एक टेम्पलेट सोल्यूशन होता है which tells you कि जी once you are going to develop a system, how it's going to look like. So what a reference architecture does, it provides you a blueprint of a model जो कि आप build करने जा रहे हैं, and it tells you that this is going to be the scope of that architecture and what sort of requirements it's going to fulfill or satisfied, and eventually what different types of architecture of the design it's going to. Generally जो है architectures they give you standardized practices and well established principles which ensure some sort of consistency and quality across development and delivery both. ठीक है. और फिर जब आप उसकी यूजेज कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे बनने वाली प्रोडक्ट की, so that is generally also quite good as well. क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इसी तरह बात मजीद स्पेसिफिक हो जाए विद इन द सॉफ्टवेयर डोमेन इफ यू टॉक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग. So the cloud computing architectures they provide a template solution for any cloud computing or platform architecture which is going to be built. तो उसका एक वो मॉडल बता देता है रेफरेंस आर्किटेक्चर के जब भी आपने कोई क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है उसका आर्किटेक्चर बनाने लगेंगे तो हम जनरली हाउ इट शुड लुक लाइक व्हाट शुड बी द मेजर कंपोनेंट्स इनसाइड दैट आर्किटेक्चर. So these architectures they generally require that they are going to be multiple components which are going to communicate with each other. और जनरली इनकी जो कम्युनिकेशन होती है या जो उनका इंटर रिलेशनशिप होता है जनरली इट्स इन अ वेरी लूजली कपल्ड वे. It's generally in a loosely coupled way. Loosely coupled में क्या होता है? They do not have much interdependence upon each other. So the components are built as an independent components with some well-defined interfaces. So they talk with each other and then they get the work done through mutual collaboration. Different किस्म के जो आपके सिनेरियोज हैं उनके अंदर क्लाउड आर्किटेक्चर आपका डिफर कर सकता है और डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चरल पैटर्न्स भी मौजूद हैं जो कि आप जब भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो यू कैन यूज देम एज वेल. जैसे यूएमएल बेस्ड आपके पैटर्न्स हैं यूज देम एंड यू बिल्ड दीज आर्किटेक्चर्स. अब इसमें मल्टीपल टाइप के हम आर्किटेक्चर्स जो रेफरेंस आर्किटेक्चर्स हैं उन्हें देखेंगे. कुछ बहुत वेल डिफाइन है, कुछ लेसर डिफाइन है. जो बड़ा कॉमनली रेफर किए जाते हैं वन ऑफ देम इज फ्रॉम निस्ट एंड द अदर वन इज फ्रॉम IBM. उसके अलावा भी कुछ हैं तो वी विल क्विकली गो थ्रू देम. ये पहले एक आपको एक नजर आ रहा है. दिस वाज डिफाइंड इन 2000s बाय सन इन द अर्ली डेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बाय द सन microsystems. Sun microsystems you must be knowing later on it was acquired by Oracle, so now this is part of Oracle. How the sun is defined, they say that there are multiple layers starting from
Starting from the physical layer, then you have virtual servers. So you install some virtualization softwares. On those virtualization softwares, you create some VM images. Then you install an applications. Then you do have a middleware layer. Different किस्म की आपकी middlewares होती हैं, which makes it more distributed and the multiple system they can work together. Then you deploy the application, and through those applications you deliver some services. So this is the initial model which was given by the Sun Microsystem. एक और research based early days में cloud architecture आया, that was proposed by Al Yusuf, and they proposed a stack of layer, and this was the early building block जिसमें बताया गया कि the cloud is going to be like this, and these layers are going to be there in a standardized cloud platform. इसकी बात करें तो they define it like there are going to be these layers. The bottom layer is going to be the firmware or the hardware layer. Then there is going to be a software kernel. अब ये नामों का थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है, थोड़ा differentiation है, but the purpose is similar. You are going to see it across. इसके बाद on software kernel you do have a cloud software infrastructure, then you have cloud software environment, and then you have a cloud applications. तो अगर ये तीन लेयर्स को आप देखें, क्लाउड एप्लीकेशंस, क्लाउड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट एंड क्लाउड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, so they are exactly the same layer that we define now as infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. ठीक है, और उसके नीचे कोई virtualization platform or the operating system, whatever you are having, that is there, and then underlying you do have a hardware as well. सबसे पहली लेयर की बात करें, फर्मवेयर और हार्डवेयर लेयर. सो इन द अर्ली डेज देयर वाज आल्सो अ कांसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, बट नाउ वी नो लॉन्गर जनरली प्रोवाइड दिस टिपिकल physical hardware as a service. So you can provide this, in which you can provide physical computing, switching, routing, networks, everything as a service from some backbone. So you may have a cluster dedicatedly assigned to some third party, ठीक है, किसी क्लाइंट को आप वो एक असाइन कर सकते हैं. कम इसका यूजेज कम है, बिकॉज राइट नाउ यू प्रोवाइड दीज हार्डवेयर, बट यू प्रोवाइड इन दिस लेयर in cloud software infrastructure. This is hardware infrastructure and this is software infrastructure. So with this layer we are defining it as a hardware infrastructure layer, जो actual physical hardware होता है आपका. So we are defining it with this thing. So in this you are going to provide physical hardware to your clients, और सारी सर्विसेज उससे लिंक जाए, नेटवर्क से उनकी एक्सेसेस हैं and everything, और it's good solution. But again वो जो क्लाउड के मेजर बेनिफिट्स हैं लाइक सर्वर कंसोलिडेशन एंड द अदर थिंग्स, यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली रीप दोज बेनिफिट्स, ठीक है, वो आपको वो वाला फ़ायदा नहीं मिल सकेगा अगर आप ये हार्डवेयर एज अ सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर कर्नल. सॉफ्टवेयर कर्नल जो है, it's the layer which gives you virtualized access to the underlying hardware and give you the ability, or gives the ability to the clients to build some sort of infrastructure on top of that, be it the servers or the applications, whatever they want to have. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस लेयर पे आ जाती हैं. So this is the software kernel layer. So typically our virtual machine manager or monitor resides at this layer, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको reside करते हैं, और इसके अंदर we after deploying this virtual machine monitor we create virtual machines, ठीक है, यहाँ पे create कर रहे हैं. So VM monitor जो है, they gives you many facilities, या VM managers जो हैं they provide you a complete encapsulation of VM software, और इस encapsulation के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, because you get it isolated from the rest of the machines, virtual machines, and it provides you an additional layer of security as well. Then it gives you more server consolidation as well. Then this layer, actually how it works, it creates a mapping between the virtual machine and the physical machine, ठीक है, जो आपकी virtual machines की resources हैं उनके दरमियान में, और जो physical hardware resources हैं उनके दरमियान में एक mapping create कर देती है.
एक बहुत बड़ा benefit which we have discussed before as well, because of the virtualization, what we can do is we can easily migrate our machines from one machine to another machine. ठीक है, तो क्योंकि वो virtual machines होती हैं, वो logical होती हैं, so we simply move that files, वो जो उनकी stored file होती हैं, जिनमें उनकी state save होती है, we can simply move them from one machine to another physical machine. Then we can also we can also do the load balancing with a lot of ease. It becomes very easy to do the load balancing with the virtualization platforms. So this is the layer which is essential to be there. ठीक है, हालांकि हम cloud computing में कहते हैं yes, we can do the cloud computing without this, but if you look around all the cloud computing platforms, they definitely do have this layer. They do not offer you services generally without doing the virtualization, because with the virtualization they get a lot of benefits as well. Then cloud software infrastructure, जैसे मैंने पहले कहा, this layer is exactly like what we say is infrastructure as a service, and you can see here that the services that this layer can offer are, what are those? Computational resources or computational services, storage resources, and communication resources. So this is how we actually define Wi-Fi infrastructure as a service. We say compute, storage, and network. So these are the same services. So it provides those services. So if we talk about the computation, which is a very common model these days, if you want to acquire cloud computing resources, and cloud got a lot of popularity because of this model, and we can say compute or computation as a service, and it is generally being enabled by some sort of a virtualization platform, और चाहे वो आपका vmware है, आपका zen server है, या Microsoft है, anyone you use, but it's been done generally by the virtualization. और आपके जितने भी public cloud platforms हैं, they do it, be it the Microsoft Azure or EC2 or Google Compute Cloud, everyone is doing this. ठीक है, और बहुत सारे इसके अलावा दूसरे भी आपके पास private cloud platforms ही मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप जो है ये compute based services ऑफर कर सकते हैं. इसमें Globus was used to be, Eucalyptus is good. Eucalyptus का एक फ़ायदा ये है कि you can run the Amazon machine images as well, क्योंकि हर एक का जर्नी अदरवाइज अपना फॉर्मेट होता है machine image का, जो virtual machine image का होता है, हर एक का अपना फॉर्मेट होता है. So Eucalyptus जो Amazon को रन करता है, so what you can do is you can have a hybrid cloud. आप Amazon पे और अपने private cloud के दरमियान easily migrations कर सकते हैं of your machine instances. Then you can use OpenStack as well. OpenStack is बहुत ज़्यादा popular है, ज़्यादा widely used होता है. Even there exist many public cloud platforms which has deployed their cloud based on OpenStack platform. हो गया जी. Then you can have cloud storage as a service as well. So you can have data storage as a service in which you can manage large amount of data at remote locations, और उसमें फिर आप storage related बहुत सारी facilities दे सकते हैं. You can have a geo application, you can have disk stripping, you can have archiving, and many type of facilities. ठीक है, और again, like other services, availability, reliability, performance, replication, consistency, maintenance, migration, they are generally some requirements which has to be met while you talk about the storage services. कोई भी सर्विस की बात होगी, it's not only the storage service, so we need to have some SLAs as well, service level agreements, और जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं और बताते हैं कि जी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस. अगर उससे कम पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देगा, सो देयर इज गोइंग टू बी an issue, or there can be a conflict between the client and the customer and the service provider as well. Cloud software infrastructure में तीसरी जो चीज़ हमने बात की, that is communication as a service. So the communication networks, they give you communication services,
different types of communication services, along with the things which are required for the communication. For example, you can have VLANs. It can provide you encryption services as well for the secure communication and etc. Or voice over IP based communication. Then there is cloud software environment, जिसको भी हम कहते हैं platform as a service. Or the user of this layer are cloud application developer typically, but there can be others as well. They can implement their application over the cloud, or you may be running some sort of servers as well from the cloud. Or so this is modernly called as platform as a service. So there exist many platforms for that as well. I think you are quite sorry, you are quite now familiar with these different distinctive platforms. We talked about Microsoft Azure. Azure gives you a fabric as well through which you can deploy your servers onto Azure. Similar is for the Google as well. Google will provide you a development fabric through which you can do some sort of development over the Google as well. So अभी थोड़ा सा change भी हो गया. And then if we talk about again Microsoft Azure platform, so you can deploy application across different service types. You can deploy in the software as a service. You can deploy the platform as a service. And then they have their own concepts like because generally they encourage you more to do the development in the .NET based technologies, and along with that they do offer you some other options as well. अच्छा ये सबका ये गूगल की अपनी कुछ सेट है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना, अमेजोन का अपना सेट है. सो to that you actually use these services. Then at the end we do have cloud applications. और cloud application में there exist different types of applications. वो आपकी collaboration applications भी हो सकती हैं, वो आपकी CRM applications हो सकती हैं, ERPs हो सकती हैं, any type of application, तो banking management system हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. So यहाँ तक का आपको already काफ़ी idea है. And in this model अगर हम इसकी बात करें, so it has specifically focused on these things. अब इन चीज़ों को अगर देखा जाए, so this is a very simplified thing. This does not define the whole cloud. ये cloud की services को बता रहा है. But how the cloud is going to be built, it does not tell you in detail. Like simple बता रहा है, चलिए ये applications हो सकती हैं, ये software environment हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, but does not tell you कि ये सारी चीज़ें manage कैसे होंगी, इनकी billing कैसे होगी, इनकी metering कैसे होगी, इनकी SLA management कैसे होगी. There is nothing here. ठीक है, चलिए. So for that, very good reference architecture is from NIST. NIST or IBM, they are two commonly referred architecture. काफी अच्छे reference architectures develop किए गए. NIST के architecture की बात करें तो this is the NIST reference architecture. तो अभी जो चीज़ हम थोड़ी देर पहले हमने देखी, ये वाली जो हम अभी तक देखते आए थे, पहले भी तकरीबन इन्हीं चीज़ों के दम घूम रहे थे कि जी क्लाउड है, और क्लाउड में ये 3 टाइप्स की सर्विसेज हैं, और उनके नीचे आपका वर्चुअलाइजेशन एंड देन यू डू हैव हार्डवेयर. तो निस्ट में वो सारी की सारी चीज़ ये आ रही है, सिंपल है. बट यू नीड टू हैव मेनी अदर कंपोनेंट्स एज वेल, जिस तरह से यहाँ हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ सकते हैं. बट पर्टिकुलरली एट दिस एंड ऑन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड यू नीड टू हैव सम अदर थिंग एज वेल. जो क्लाउड की पूरी सर्विसेज की मैनेजमेंट है, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द क्लाउड सर्विसेज, नॉट अबाउट देयर मैनेजमेंट. सो क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट किस तरह होनी है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी प्राइवेसी किस तरह इंश्योर होनी है, क्लाउड ब्रोकर या और कोई रोल जो जिन लोगों का इसमें आता है उनका क्या रोल हो सकता है. सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स एज वेल. तो निश ने क्या किया, रोल बेस्ड इसको डिफाइन किया. सो दे डिफाइन इट विद major roles. One is cloud consumer, the other one is cloud auditor, then cloud provider, cloud broker, and cloud carrier. Principal 2 roles are cloud provider and cloud consumer, obviously. ठीक है, ये दोनों, और बाकी जो है वो उसमें facilitate करते हैं. So cloud consumer is what? He is the client. So cloud consumer is a person or organization that maintains a business relationship and which actually consumes the resources from the cloud provider. Whereas the cloud provider is the cloud service provider, and it's going to be generally an organization, maybe a person as well,
or an entity responsible for making services available to the interested parties. And these interested parties can be a person or an organization. Then comes the cloud auditor. Cloud auditor is a party that can conduct independent assessment of cloud services, information system, operative, performance, security, or the implementation. The auditors क्या होते हैं? They are the third parties generally. That you do have auditors within your organization as well, but there are going to be some third party auditors as well, and they are generally the IT auditors principally. They do they conduct the IT audit, and what they do is they do an independent assessment of your services, और वो चेक करते हैं कि आप जो सर्विसेज हैं उनकी कंप्लाइंस दे रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, प्लस सर्विसेज की सिर्फ ये नहीं होता कि जी सर्विस आपकी ठीक चल रही है. Let's say there is an issue, so how do you do the compliance whenever there is an issue has been raised? How your customer service management works in case there is an issue with the customer services. तो जब भी इस तरह का कोई इशू हो, so they do see these things, और उसकी बेसिस के ऊपर वो necessarily action करते हैं. Then there comes cloud broker. Cloud broker क्या करता है? It may be some intermediary party which takes the services from the cloud provider and provides you further. And then what they do is they negotiate a relationship between the provider and the cloud consumer. So you may see some companies working in intermediate, and they provide a broker role as well. You must have seen these things with the ERP business as well. जो ERP के businesses चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा जैसे Abacus Consulting, and there are many other companies which provides a broker role between an organization and the ERP service provider like SAP or Oracle or Microsoft Dynamics or whatever service you want to have. So उनके दरमियान में एक वो broker का role play करते हैं. So the similar is for the cloud. And then there comes the cloud carrier as well. Generally, once we are talking about the cloud services, so we generally refer to public services. So public cloud services are being handed over, are being delivered through the internet. So how do you get connected to the internet? It's through some sort of carrier. So any intermediary which works to provide you the connectivity to the actual cloud provider serve as a cloud carrier. So वो cloud carrier का role भी बड़ा important होता है. Any question till now? कोई question हो किसी का? No, sir. Okay. एग्जाम्पल सर्विसेज जो आपकी क्लाउड कंज्यूमर के लिए हो सकते हैं, देयर कैन बी मैनी. ये सिर्फ ऐसे एक छोटा सा सेट दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सॉस कंज्यूमर, सो यू कैन हैव एचआर सर्विसेज, ERP, social networks, financials, content management, collaboration services. For paas consumer, you can have a database, developing, testing, application, storage, CDN, or other services. So these services, they can be there. Okay, 1 minute. Cloud provider does what? Cloud provider is the entity which is responsible for making a service available to the interested party. और ये different types के आपके cloud provider हो सकते हैं. एक cloud provider भी multiple type के role कर सकता है. You can have a SaaS cloud provider, you can have a paas cloud provider, and you can have an infrastructure as a service provider. ठीक है जी. Tell me about few things. मैंने पहले भी शायद बात की थी. आप अगर let's say you are renting a service, you're a cloud provider, और आप एक
सर्विस कर रहे हैं, आप वेब सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और एक वेब सर्वर की सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी वेब सर्वर जो है वो एज आ सर्विस अवेलेबल है। आपका जो क्लाइंट है वो क्या करता है, वो उसके अंदर अपनी वेबसाइट्स को इंस्टॉल करता है, ठीक है, अपनी वेबसाइट्स को उसके अंदर इंस्टॉल कर देता है और फिर उनको लाइव कर देता है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस द क्लाइंट इज टेकिंग फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। तो एक्चुअली दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, ये आपकी प्लेटफॉर्म सर्विस है, इट्स नॉट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हाँ, आपने जो वेबसाइट बनाई और लेट से वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपका जो क्या कहते हैं स्कूल की बना दी हुई, जिस तरह स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम था। तो अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के आगे क्लाइंट्स जो हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या वो कोई इदारे हैं, कोई भी हैं, वो क्या होंगे, उनके लिए वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगी। विंडोज़ क्या है जी, वैसे इट्स अ प्लेटफॉर्म वैसे, और विद द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट शुड बी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। विंडोज़ क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यस। लेकिन खाली विंडोज़ असल में हमारा कोई पर्पस सर्व नहीं करती। तो जितने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्टली वो कोई ना कोई सर्विस दे ही रहे होते हैं। जैसे वेब सर्वर है तो वो वेब होस्टिंग का काम देता है, डेटाबेस सर्वर है वो भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, वो डेटाबेसेस का काम देता है। विंडोज जो है वो बेसिकली कोई काम नहीं देती, ठीक है। विंडोज में इवेंचुअली विंडोज प्लेटफॉर्म में आपको कोई ना कोई और प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ता है, वो कोई काम देता है, ऐसा ही है ना। विंडोज में ही आप कोई डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, विंडोज में या लिनक्स में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी ओएस में ही कोई ना कोई आप इंस्टॉल करेंगे, ऐसा ही है। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म चीज़ है, विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गई, ये आपको मोस्टली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के प्लेटफॉर्म में बंडल होने की बजाय ये आपको हार्डवेयर में मिलती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्चुअल हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, उसमें मिलती है। बिकॉज खाली आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेंगे तो उसमें भी कोई भी आप सर्वर पहले नहीं चला सकेंगे अनटिल अनलेस आप उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जहमत से जनरली आपको बचाते हैं और वो कहते हैं कि जी अच्छा यार, कौन से आपने कोई भी वीएम लेनी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, अदरवाइज विंडोज नहीं होता, ये ओएस नहीं होता। ओएस आपको पहले भी मैंने बताया था, ये ग्रे लाइन है बिटवीन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो वो आपको क्या कहते हैं, दे गिव्स यू एन ऑफर कि अच्छा इनमें से कोई से विंडोज के साथ ये वीएम का इंस्टेंस ले लें, बेशक स्मॉल लेना है, लार्ज लेना है, कोई भी लेना है, तो वो आप बता दें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको चाहिए, आप उसके साथ लें। सो दिस इज हाउ द थिंग्स दे वर्क। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो दोनों के हाइब्रिड है, बीच में आता है, तो इसलिए यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। जनरली प्रैक्टिकली इट कम्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, ठीक है, बट विद डेफिनेशन इट्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। तो इसलिए ये आपको ज़रा क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में कि जी कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ फिट इन होती है। लेट्स मूव फर्दर, वापस आते हैं इस पे। तो क्लाउड प्रोवाइडर अब जो है ना वो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर एज सर्विस से हो सकता है। अब जैसे वही बात की कि हमने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के गूगल क्लाउड पे लॉन्च कर दिया, तो गूगल क्लाउड जो है वो हमारा प्रोवाइडर है और उन पे हमने होस्टिंग कर ली या उन पे अपने सर्विस ले ली है और आगे जो है अब हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम भी एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड है जी, क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जी हम ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो हम भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं अपने कस्टमर के लिए। तो हम सास क्लाउड प्रोवाइडर हैं और गूगल जो है वो हमारे लिए पास क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस डिफरेंस। गूगल आल्सो गिव्स यू अदर फैसिलिटीज एज वेल। अब जिस तरह ये टीम्स है तो यू कैन यूज द टीम्स एज वेल। अब वही बात हो गई कि हम दो तरीके से एलएमएस चला सकते हैं। एक एलएमएस का तरीका ये है कि जी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ले लें। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के एजूर प्लेटफॉर्म पे हम मूडल इंस्टॉल कर लें, ठीक है, और मूडल पे हम सर्विसेज दें। तो अब फर्क क्या हो गया, अगर हम टीम्स लेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट को कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर होगा, माइक्रोसॉफ्ट उस सर्विस के लिए हमारे लिए कौन सी सर्विसेज दे रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए जी। दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें मकसद ये है, हमने सर्विसेज देनी थी
क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन LMS की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, थ्रू विच वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर कोर्स मटेरियल्स एंड एवरीथिंग टू आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके थे, अभी भी इस वक्त राइट नाउ वी डू हैव टू मेथड्स। एक ये कि आप मूडल के थ्रू कर दें, ठीक है, मूडल जो प्लेटफॉर्म विच इज़ ओपन सोर्स, आप उसे डाउनलोड करते हैं, यू कैन रन इट ऑन टू एनी वेब सर्वर। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको हम टीम्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट मैंने असाइनमेंट क्रिएट की, तो असाइनमेंट मैंने टीम्स पे भी कर दी और मैंने मूडल, हालांकि हमारा प्राइमरी प्लेटफॉर्म कौन सा है, मूडल है, तो लेकिन चूंकि कुछ लोगों का ये था कि शायद ना हो, तो चूंकि टीम्स भी मौजूद है, so I created an assignment onto Teams as well, because Teams gives you LMS facility as well. Okay, so we do have these two options. So if I go for Microsoft Teams, so this is one scenario, and the second scenario is that I go for Moodle and host it onto Microsoft Azure. ठीक है, वो भी Microsoft के cloud पर है. Teams is also a cloud platform. ठीक है, ये cloud based collaboration platform. So what is Teams for me? So if I'm using Microsoft through Teams, so Microsoft मेरे लिए कौन सा cloud provider है? This is my question. जी, अगर मैं Teams यूज करूं, अभी आप लोगों ने बताया, this is very strange. सर टीम्स हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगा और जो दूसरा होगा वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा। जी बिल्कुल सही है। अगर हम सॉफ्टवेयर टीम्स हमारे को नहीं, सो टीम्स जो है वो हमारे पास जो वो बना है, ठीक है। टीम्स के जो नीचे के कौन से सर्वर्स पे चल रहा है, वो सर्वर्स में कोई अपडेट्स करनी है, कुछ होना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी डन बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर अस। लेकिन अगर हम जाते हैं मूडल को, सो वी हैव टू डिप्लॉय मूडल ऑन टू some web services provided by Microsoft. Excuse me. तो वो हम उस पर डिप्लॉय कर देंगे। फिर डिप्लॉय ऑन टू दैट, तो वो फिर हमारे लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि हमने उनकी वेब होस्टिंग सर्विसेज या वेब सर्विसेज हम ली होंगी, और वो सॉफ्टवेयर को, जो मूडल का सॉफ्टवेयर है, इसको हम मैनेज कर रहे होंगे। एंड व्हाट वी कैन डू विद मूडल इज, विद दैट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज, वी कैन अनइंस्टॉल दैट एज वेल, वी कैन अपग्रेड इट एज वेल, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट विद Microsoft Teams we cannot do that, we cannot uninstall Microsoft Teams or something, we can just end the subscription, ठीक है, with a cloud provider, लेकिन हम नहीं कर सकते। So this is the difference, this is how you need to distinguish the two things. तो SaaS के केस में हमने वो जो LMS है, हमने उसको मैनेज नहीं करना, ठीक है, उसकी एडमिन नहीं करनी। जबकि मूडल के केस में उस मूडल को मैनेज किसने करना है, वो हमने करना है। सो वी डू हैव मोर कंट्रोल, बट वी हैव टू डू मोर मैनेजमेंट एज वेल इन केस ऑफ पास। तो SaaS क्लाउड प्रोवाइडर क्या करते हैं जी, कमिंग बैक टू हियर, SaaS क्लाउड प्रोवाइडर जनरली दे deploy, configures, maintain and update the operation of the software application on the cloud infrastructure. तो ये वो सारे काम करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के हैं वो सारे काम करते हैं। और अगर तो पूरा स्टैक ही उनका है, तो फिर वो ये काम भी करेंगे, वो ये काम भी करेंगे, और वो ये काम भी करेंगे, ठीक है। अगर वो क्लाउड प्रोवाइडर सारी सर्विसेज खुद ही नीचे की मैनेज कर रहा है, तो ये सारे की सारी वो खुद करेगा। सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना, कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, वर्जन अपग्रेड करना, व्हाटएवर दे हैव टू डू, इट्स गोइंग टू बी डन बाय द SaaS क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है जी। तो कंज्यूमर जो सिर्फ उस SaaS को यूज करेगा। जब हम पास की बात करते हैं, तो पास के अंदर जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ही मैनेजेस दी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। वो जो पास के सॉफ्टवेयर हैं, कोई सर्वर है, उसको अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, वो करेगा, लेकिन नॉट द सॉफ्टवेयर, जो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर होंगे वो नहीं। सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, वो कंज्यूमर का होता है, वो यूजर का, ये क्लाइंट का होता है। इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें क्लाउड का कंट्रोल और कम होता है, वो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है और उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर जो एक्चुअल सर्विस इंस्टॉल, वो
आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो सॉरी पास के जो कस्टमर हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो इंस्टॉल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उससे ऊपर की सर्विसेज। अगर हम दूसरा व्यू देखें, कंज्यूमर का देखें, तो कंज्यूमर का इसके ऑपोजिट हो जाता है। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर जो है वो आपका प्रोवाइडर की तरह मेजर स्टेक होल्डर है, और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन एज वेल। और प्रोवाइडर के केस में तो इंडिविजुअल्स कम ही होते हैं, जनरली ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, बट कंज्यूमर के केस में यू कैन बी एनी इंडिविजुअल एज वेल। और क्लाउड कंज्यूमर्स जो हैं वो करते क्या हैं? दे टिपिकली गेट द सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर बाय लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ अ सर्विस कैटलॉग, और उसकी बेसिस के ऊपर दे रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज एंड देन दे सेट अप सम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। और इवन एज एन इंडिविजुअल भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर साइन कर रहे होते हैं। यू सब्सक्राइब फॉर एनी न्यू सर्विसेज, सो देयर इज अ सब्सक्रिप्शन, बी इट फ्री और बी इट द पेड वन, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप पढ़े बगैर आई एग्री करते हैं और आप आगे मूव कर जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग द सर्विस बिकॉज यू आर जनरली इन अ वेरी हरी टू यूज द सर्विसेज। बट देयर इज एन इश्यू, एंड व्हाट्स द इश्यू? उसको पढ़ लिया करें, उसको ज़रूर पढ़ा करें, बिकॉज they may be asking you to share your data with the cloud or with other, because आपको पता है कि ये डेटा बड़ा एक्सपेंसिव बिकता है, जो पर्सनलाइज डेटा है। A cloud consumer may be billed for the services provided, लाजमी नहीं है। हमने पहले भी बात की थी कि क्लाउड सर्विसेज they have to be definitely metered, उनकी मीटरिंग ज़रूर होगी, बिल्ड होंगी या नहीं, it depends upon the type of services and how the contract is between the service provider and the consumer. For example, if we talk about Google storage services for the consumers, आम consumer के लिए आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट है, काइंडली म्यूट योर माइक। आप में से किसी का माइक जो है वो किसका माइक ऑन है? So इसको इसलिए जो है ना, आपने लेट्स से पर्सनल अकाउंट से आपने गूगल की स्टोरेज ली हुई है, इवन वंस यू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, it gives you, I think right now it gives you 15 gigabyte of storage. Previously it was used to be giving 30 gigabytes, but now it gives you 15 gigabytes. If you want to go beyond that, you have to go for a subscription for cloud. So up till a certain level, it's giving you these services free of charge, but if you go beyond that, yes, you have to pay for that. So it depends. And then you definitely need some sort of an SLA to specify the performance parameters, कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वो कोई भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो एवेल्युएट किया जाएगा। इट कैन बी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कैन बी अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, एटसेट्रा। ठीक है। Generally, cloud consumer, they can choose among different cloud providers depending upon the services. अक्सर ये भी होता है कि cloud consumers जो हैं वो different services different cloud providers से ले रहे होते हैं, सारी एक से नहीं लेते। Cloud consumers जो हैं, similarly if we talk about like we talked about the cloud provider, the consumers अगर वो SaaS के होंगे, so there can be an organization which provides their member with access to the software application. For example, Microsoft Teams. So Refa International University or University of Central Punjab or any other university which is using the Microsoft Teams services. So they are an organization which has acquired these SaaS services, and now they are providing their users or their members with these services. The other could be some end user, some individual, which is directly using some software application, like you are using Google's Gmail or Google Drive or Google Form services to get a usage of them. Software application administrators can be there and who do configure applications for end users. Then paas consumers. They can be application developers who design and implement software applications. They can be paas consumers. Then you can have application testers as well.
You can have service deployers as well or application deployers as well, जो कि application या services को deploy करते हैं onto servers or onto the cloud. And then you can have those application administrators as well, जो कि उनकी सारी monitoring करनी, testing करनी, configurations करनी, maintenance करनी, ये सारे काम कर रहे होते हैं. And then you can have infrastructure as a service consumers as well. तो इस तरह के जो systems हैं उनके जो users हैं, they are generally too much technical guys and more admin guys. So it can be a system developer, but mostly they are the system administrators or IT managers जो कि अपने maximum control के साथ cloud की services को use कर रहे होते हैं. If you talk about the cloud auditor is some third party generally. It can be internal auditor as well, not necessarily the third party. So we generally distinguish if it is internal, then we say it internal auditor, and if it is a third party, then we say it external auditor. So it's a party that can perform an independent examination of cloud service controls, or जिसमें वो audit करते हैं, and then they can tell you the problems, the loopholes, and then the conformance to the standards as well. Or generally the audits, they are carried out to check that are you conforming to the generally agreed upon practices or the standards. And in that, the auditors, they generally see the documentation, plus they monitor the actual work which is going on, your operations, and the evidences which are there. And cloud provider auditors, different types के audits कर सकते हैं. They can have a performance audit, which is very common. कि reliability और availability जो है वो क्या assure हो रही है. उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आपके clients के साथ interaction कैसे हो रही है, SLAs कैसे manage हो रहे हैं, service catalogs कैसे manage हो रही हैं. Then they can also do security audit as well, and privacy audit as well, and especially the privacy impact audit as well. ये सारे audits करना ये cloud auditor का काम है. Then there is a cloud broker. Broker का क्या काम होता है? It's an entity or a middleman which manages the use, performance, and delivery of cloud services, and may negotiate the contract between provider and consumer. Generally, जो है cloud broker, they provide services into three categories. The first one is service intermediation, the other one is service aggregation, and the third one is service arbitrage. We talk about the service intermediation. It means that the cloud broker provides the same services which he's getting from the provider, but he generally enhances this service by adding some more value-added feature. For example, there can be identity management along with that. There can be some more enhanced security as well, end-to-end encryption. So they provide the existing services with some more add-on features. Then in case of a service aggregation, what the cloud broker performs is they combine and integrate multiple services into one or a new service. ठीक है, वो क्या कर देते हैं, existing services multiple को मिला के कोई नई service बना देते हैं. ठीक है, और उसमें ये हो सकता है कि जी let's say आपकी जिस तरह एक attendance service है और उसके साथ आपकी marks या assessment की service है. These are two independent services. So you can combine them as well. Then service arbitrage. Arbitrage जो है, it's quite similar to aggregation. लेकिन सिर्फ ये होता है कि ये client can actually make this aggregation, और ये aggregation जो पहले से fix नहीं होती. So multiple type की जो है वो services जो है multiple service providers से लेके client को जो है वो serve कर दी जाती है. Then cloud carrier की जैसे हमने पहले बात की कि it's an intermediary which provides you connectivity from service provider to the client, and cloud carrier जो है ये it carries you to the networks, telecom, and other operators. So generally your telco operators and these service providers, they are the cloud carrier. For example, PTCL is widely being used in Pakistan to act as a cloud carrier. ठीक है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है. Service deployments की बात करें with the perspective of NIST. So NIST says you do have, if you are using a public cloud, so the consumer can be some individuals, or consumers can be some enterprise.
and there are going to be many individuals within that enterprise which are going to use those services. If we talk about on-site private cloud, so you do have a consumer enterprise network, and the private cloud is hosted over there. So the consumer is going to use within its own site the cloud services. Then there can be outsourced private cloud, in which the consumer enterprise is separate and the cloud provider is separate, and the cloud provider has dedicated some specific resources for you for permanently. So this is outsourced private cloud. Then you can have a community cloud as well. So if you do have an on-site community cloud, so you are going to have multiple organizations which are going to share these clouds as well. So this cloud can be here, 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 not necessarily on all the organizations, but on multiple generally. Then you can have an outsourced private community cloud as well, in which there are multiple organizations which together forms a community, and they are using one private cloud which is dedicated only for them. So this is an outsourced community cloud. And then you can have a hybrid cloud, a combination of any one of these if you are using that. So this is a hybrid cloud. Now, if we talk about the service orchestration, क्योंकि अभी तक जो हमने ज़्यादा पहले पढ़ा था, जैसे मैंने पहले बताया, that was more related to this thing. So this is called service orchestration. So what is service orchestration? It is a composition of system component which are going to provide the cloud services. ठीक है? So इसमें 3-tier model define करता है NIST. The first layer is service layer. The next layer is resource abstraction and control layer, and the last one is the physical resource layer. और service layer में वही saas, paas और iaas हैं. Then you do have a virtualization and the abstraction layers. And then in the physical resource, they talk about typically the computing facilities like the hardware, and then the other support facilities like the building, air conditioning, cooling, etc. So that comes in the facility. So service orchestration layer, so service layer, cloud provider defines the different types of services which is going to be provided, like infrastructure as a service, SaaS and PaaS. And then resource abstraction and control layer does what? It deals with these layers. ठीक है, ये क्या करता है? ये नीचे की लेयर को abstract कर देता है, उनका hide कर देता है from the upper layers and provides some sort of virtualization. So typically we use virtual machine monitors and such type of things to provide this virtualization and abstraction and provide the services to the clients. So these resource abstraction needs to ensure efficient, secure, and reliable usage of the underlying physical resources. Okay? So it is responsible for resource allocation, access control, and usage monitoring. Excuse me. Then there is physical resource layer. Physical resource layer जो है उसके अंदर तमाम physical चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें it includes physical computing resources and it includes the physical facilities as well. जैसे heating है, cooling है, ventilation है, power supplies हैं, generators हैं, backups हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी physical facilities में आ जाती हैं. So they need to be defined कि जी अच्छा वो कैसे होगा. जैसे अब आप cloud provider cloud के लिए जब services देंगे, you are going to build a data center, and the data center design is a very difficult thing, and you need to actually counter these things as well. ये जो आपकी physical facilities की हैं, ये बड़ी significant role play करती हैं. Then there comes cloud service management. Cloud service management जो है वो अब जो आप cloud की services दे रहे हैं, they need to be managed as well. Or it contains all those functions which are necessary for the service which you are going to provide, जो भी देनी है SaaS या IaaS या PaaS, और इन सर्विसेज को मैनेज कैसे करना है, इनको प्रोविजन कैसे करना है, और ये सारे काम करना जो क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट का काम होता है. और 2-3 इसके अंदर मल्टीपल टाइप की एरियाज हैं. एक है बिजनेस सपोर्ट का, दूसरा है प्रोविजनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन का, एंड द थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. अब इसमें जो बिजनेस सपोर्ट है दैट डील्स मेनली विद द
business aspects of that cloud services. जो provisioning and configuration, it deals more with the actual technical aspect of that cloud services. कि let's say a client wants to acquire a new compute instance, तो वो compute instance की request actually comes to this layer. ठीक है, वो provisioning and configuration वो आएगी. And then there comes portability and interoperability. ठीक है जी, पोर्टेबिलिटी में और इंटरऑपरेबिलिटी में क्या होता है? पोर्टेबिलिटी में ये होता है कि यू कैन पोर्ट थिंग फ्रॉम, यू कैन मूव वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इन इंटरऑपरेबिलिटी में टू डिफरेंट थिंग्स दे कैन टॉक टू ईच अदर. सो इनको देखते हैं जी. सबसे पहले आगे जी बिजनेस पोर्ट सर्विसेज. अब बिजनेस पोर्ट जो है, इट इन्वॉल्व्स द सेट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टास्क which are dealing with the services. So it involves the client and the consumers and the service provider and other roles as well. और major जो components हैं उसके अंदर वो क्या हैं जी? There can be many. Some of the components which they have specified over here is customer management, very important. You have to manage the customer accounts, customer profiles, customer relationship, customer query handling, उनकी जो भी incident reporting, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. Then contract management, आपके जो contracts हैं with the customer, with the suppliers, with your vendors, with your partners, उन सब के साथ जो आपके contracts हैं उनकी management, it needs to be there. Then inventory management. Inventory इसमें mainly क्या है? जो आपकी service inventory है, जो आप services offer कर रहे हैं, so how many services you can maximum do, so that is there. Then accounting and billing, वो जो मीटरिंग होनी है उसकी बेस पे जब आपने क्लाइंट को चार्ज करना है, सो दैट इज डन इन अकाउंटिंग एंड बिलिंग. देन रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, यूजर के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर इफ देयर आर सम इंसिडेंट्स और एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, यू नीड टू रिपोर्ट दैट एंड यू हैव टू जनरेट द ऑडिट्स एज वेल. एंड देन pricing and rating mechanism. In pricing you generally specify कि what is going to be the pricing model for different types of services. उसमें डिफरेंट किस्म के जो टाइप्स होती हैं, इंस्टेंट टाइप्स हैं या व्हाटएवर, वो आपने स्पेसिफाई करनी होती है. इन रेटिंग, यू डू द रेटिंग ऑफ योर सर्विस एज वेल, क्योंकि रेटिंग से बड़ा अच्छा आपको ये आइडिया हो रहा होता है कि ओके हाउ द सर्विस इज गोइंग टू बी परफॉर्म. और वो रेटिंग दोनों होती हैं, इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं. एक्सटर्नल तो जनरली होती हैं जिस तरह आप देखते हो कि हाउ डू यू रेट, यू आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स, बट यू कैन हैव इंटरनल रेटिंग एज वेल. कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कस्टमर को नहीं पता लग रही होती हैं, सो यू कैन डू दी rating internally as well. So rating is there. Then you do have provisioning and configuration. In provisioning or configuration की बात करें, so they are more technical. So once a customer requests for some sort of services from the cloud provider, it goes through the through the provisioning and configuration. So you can have a rapid provisioning. So in the rapid provisioning, you do the automatic deployment of the cloud requested services. Then you can have a resource changing, in which if there is a configuration being done, कोई भी configuration हो रही है, repairs हो रहे हैं, downtime था उसकी वजह से किया या किसी वजह से किया, doing some upgrades, you are including new components into the system. So whenever you are doing a change into the configuration items, ठीक है, वो CI होती है. So it's there. Then monitoring and reporting, जो भी आपकी resources जो सर्विस दे रही हैं उनकी मॉनिटरिंग और फिर उनकी रिपोर्टिंग. देन जो सर्विसेज यूज हो रही हैं उनकी मीटरिंग. एंड देन SLA मैनेजमेंट, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है विद द क्लाइंट, उसकी मैनेजमेंट, उसमें उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी है, चेकिंग कि जो क्लाइंट से हमारा वादा था इन दी SLA, इज इट कन्फॉर्मिंग टू व्हाट वी आर एक्चुअली डिलीवरिंग और नॉट. ठीक है, ये सारा देखना पड़ता है. Then comes portability and interoperability. In portability में क्या होता है कि once we move on to the cloud, we should be able to port our things to the others. ठीक है, हम multiple cloud environment के दरमियान में we should be able to move it. Otherwise अगर आप move नहीं कर सकते, you can come up with the vendor lock-in. आप एक ही vendor के जो है ना वो उसके साथ lock-in हो जाते हैं. Portability generally means what? कि you can move your applications, your services or your data from one cloud provider to another cloud provider. ठीक है, if we talk about cloud portability, generally portability का भी मतलब होता है कि you can
have one application running on multiple type of platforms as well. Interoperability का मतलब क्या होता है कि there are two things and those two things they can communicate with among each other. So the cloud interoperability means that the two different clouds can communicate between each other. So cloud provider जो है it needs to have some open interfaces, need to conform to some open standards, so that there needs to be more interoperability and portability among the systems. It can be data portability or system portability. Data portability is relatively more easier. You can simply just move your data across multiple cloud providers. System portability means that you are moving your system or your service to another machine. ठीक है, आप एक मशीन से उठा के आप दूसरी मशीन के ऊपर अपनी जो है सिस्टम है, VM है, इंस्टेंस है, उसको आप मूव करवा रहे हैं. So that is system portability. Then you can also have system interoperability. Your data or your services, they can be interoperable with the other data and the services running onto or residing onto another cloud platform. So a good cloud platform should provide these services as well with more and more degree of interoperability and portability. So now we will talk about IBM cloud computing reference architecture. IBM ने जो है वो define किया. IBM का जो reference architecture define it that it's a cross IBM framework which allows how different elements in a cloud environment they relate to each other. Generally जो एक cloud reference architecture वो यही आपको define कर रहा होता है. जो major building block है IBM के architecture में, that is common cloud management platform or CCMP. और ये basically जो CCMP है ये define करता है कि आपका जो cloud है वो किस तरीके से बिल्ड होगा और इवेंचुअली किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. कुछ IBM के आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं, 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे डिजाइन फॉर क्लाउड स्केल एफिशिएंसी है विच इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी प्रिंसिपल, देन लाइट वेट प्रिंसिपल्स फॉर लीन सर्विस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड लेवरेज कॉमनैलिटीज है जिसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिंसिपल, एंड देन जेनरसिटी प्रिंसिपल. एफिशिएंसी प्रिंसिपल ये कि आपका जो आप क्लाउड को जब भी डिज़ाइन करेंगे तो यू हैव टू डिफाइन इट फॉर लार्ज स्केल और मैसिव स्केल एफिशिएंसीज, और उसके अंदर यू नीड टू सी द फैक्टर्स दैट हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक टू डिलीवर समथिंग और टाइम टू चेंज मेट्रिक्स एज वेल. और जब भी आपने क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देखना है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फॉर द क्लाइंट टू गेट द इलास्टिसिटी और सेल्फ सर्विस एक्सेस एंड फ्लेक्सिबल सोर्सिंग, उसको देखना है कि अगेन अगेंस्ट द टाइम टू डिलीवर और टाइम टू चेंज मैट्रिक्स जो है वो क्या है. और इवेंचुअली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी फॉर अ क्लाइंट और फॉर अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. दैट ऑब्जेक्टिव इज टू you have to pull down the cost for the customers, और जो आपका response time है it needs to be decreased as well. ठीक है, ताकि वो जो है कस्टमर को एक अच्छी जब वो आपके बनाए हुए क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करे तो एक अच्छा उसका फील और उसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ जाए. तो उसके लिए ये है कि आपकी जो जितने भी सेंट्स या डॉलर्स आप चार्ज करें पर सर्विस इंस्टेंस और देन नीड टू बी रिड्यूस और टाइम ऑफ रिस्पांस जो है वो भी आपका बेहतर हो जाना चाहिए. दूसरा है लाइट वेट प्रिंसिपल. लाइट वेट प्रिंसिपल में ये है कि यू नीड टू सपोर्ट द लीन सर्विस मैनेजमेंट, और लीन सर्विस मैनेजमेंट या लाइट वेट सर्विस मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू हैव वेरी लाइट वेट पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, और उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि नीड टू फॉलो द मोर एंड मोर स्टैंडर्डाइजेशन, और ताकि आपकी जो क्लाउड को आपने मैनेज करना है, ऑपरेट करना है, बिल्ड करना है, उसकी जो आपकी कॉस्ट है उसमें रिडक्शन हो सके. ठीक है, और उसका एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल यूज होता है इन सर्विस मैनेजमेंट, दैट इज एलिमिनेट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड. एलिमिनेट में ये कहते हैं कि यू एक्चुअली एलिमिनेट द हेवी लिफ्टिंग्स, जो चीज़ें आपकी ज़्यादा बर्डन कर रही होती हैं, सिस्टम के प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर रही होती हैं, यू एलिमिनेट देम and then you make the things standardized, and by doing this actually you optimize your approach and you go for a very lean service management policy.
Then identity and leverage commonalities as well. आप identify करते हैं, sorry, you identify that what are the common things whenever you are building a service design. बहुत सारी services जो हैं उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो common होती हैं, so you need to identify those things, and then you need to leverage those commonalities rather than developing them separately. You can actually do a sharing of these service management components, and through that you can actually optimize your cost and increase the efficiency as well. So you can see that you can reduce your capital expenditures and operational expenditure. अच्छा, क्या फर्क होता है दोनों में, capital expenditure और operational expenditure में? Can anyone explain? So what is the difference between these two? Capital and जो आपका operational है, इन दोनों में फर्क क्या है? The capital expenditure वो होता है which you spend in the beginning whenever you want to acquire some resources. आप कोई resources acquire करना चाह रहे हैं, infrastructure acquire करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं. So for a cloud provider, yes, there is a huge capital investment. और ऑपरेशनल वो होता है जो कि बाद में उसको यूजेज के दौरान, ऑपरेट करने के दौरान में जो आप डे टू डे एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे होते हैं, दैट इज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. एंड देन इट नीड्स टू रिड्यूस योर टाइम टू मार्केट एज वेल, ताकि आप मार्केट के अंदर जल्दी पेनिट्रेट कर सकें, कस्टमर्स को अर्लियर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. इट नीड्स टू बी देयर एज वेल. Then define and manage cloud services generically along their life cycle, which is called genericity principle. So genericity में ये है कि आपको जो कस्टमर है उसके लिए भी ईज हो कि आपके जो सर्विस टेम्पलेट्स हैं, जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोवीन की जा रही हैं, they need to be accessed using identical mechanisms, और एक ही तरीके से जो है वो आपको विजिबल हो रही हैं. You need to define these जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, यूजिंग आइडेंटिकल टेम्पलेट्स एंड इंटरफेसेस. कि आपने कोई लेट्स से कंप्यूटर इंस्टेंस लेना है तो उसका भी इंटरफेस उसी तरह हो, और स्टोरेज का लेना है तो उसका भी उसी तरह का इंटरफेस हो, रादर के एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का. स्पेशली द टेम्पलेट डिज़ाइन जो आप कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं, या खास तौर से आप थ्रू स्क्रिप्ट्स आप कर रहे हैं, वो आपके इंटरफेसेस जो बिल्कुल एक तरह के, उनके टेम्पलेट्स हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए. लाइफ साइकिल जो है एक क्लाउड सर्विस का, IBM डिफाइन इसके, इट स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ये और वो जो डेफिनेशन है, इट्स जनरली बीन डन टू द सर्विस कंपोजर. देन यू डू हैव अ सर्विस मैनेजर जो कि उस ऑफरिंग को, सर्विस कंपोजर क्या करता है, वो एक सर्विस बनाता है, उसकी टेम्पलेट डेफिनेशन करता है, एंड क्लाउड प्रोवाइडर को प्रोवाइड करता है. सो विद द क्लाउड प्रोवाइडर देयर इज सर्विस मैनेजर. जो सर्विस मैनेजर क्या करता है, वो उसको अपने यहाँ रजिस्टर करता है. तो उसके लिए वो ये कि सर्विस ऑफरिंग की एक क्रिएशन क्रिएट करता है इनटू द सर्विस कैटलॉग, और उसको पब्लिक कर देता है तो कंज्यूमर कैन यूज इट. एंड जो सर्विस कंज्यूमर है, दे गो फॉर द फर्स्ट सर्विस सब्सक्रिप्शन. सो वंस दे हैव सब्सक्राइब टू द सर्विस, then they can start using services, and they can instantiate those services and do all those things. So now the cloud provider is providing the service and the consumer is using. So there is going to be with the provider a service operation manager as well. So the operation managers keep on providing these services. Then there can be even internal auditors and other roles as well, who are actually auditing the services, keeping an eye on the operations and everything. And at the end, the service consumer actually terminates that instance, and instance जो है वो close हो जाता है. So this is how a life cycle of a cloud service works. Cloud computing reference architecture जो IBM का है, in that they defines three roles. One is cloud consumer, the other one is cloud provider, and the third one is cloud service creator. मल्टीपल रोल्स जो हैं वो प्रोवाइडर के अंदर हो सकते हैं. इवन जो क्रिएटर है, he or she can be part of the provider as well, and even sometimes consumers as well, like in the case of जो आपका प्राइवेट क्लाउड है, उसमें कंज्यूमर और प्रोवाइडर जो है they can be similar. जो क्लाउड सर्विसेज आप ऑफर करेंगे,
So उसके लिए you need to have a management services platform, जो common cloud management platform है from IBM, और पूरा जो आपका infrastructure need to be defined. तो इसको IBM ने define किया है और फिर उसका drill down level भी बताया है. So if we see that at the with a very holistic view, so there you can see there clearly there are three roles. One is cloud service creator, the other one is cloud service provider, and the third one is cloud service consumer. Cloud service consumer जो है उसके पास yes he can have in-house IT infrastructure, maybe a complete private cloud. Then he is going to need some sort of cloud service integration tool so that his in-house infrastructure can be integrated with the public cloud provided by this cloud service provider. On the other side, cloud service creator is going to create the services with the help of some sort of service creation tools. And if you look at here in the center with the cloud service provider, you can find that there are cloud services, the way तीन services, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. But IBM defines one more level of service, that is business process as a service, because the IBM is also a consultancy company. And they provide these services as well, that business processes as a service as well. Just you can actually rent out your business processes as well. For example, testing as a service. So in general, if you are using an automated platform of testing, it's going to be placed here, platform as a service. But you may ask a third party or a cloud provider, and they may engage their own human resources in order to provide you the testing services. So that will be counted here, business process as a service. And then along with that, you can have some other third party or ecosystem as well. Underlying, you're going to have some infrastructure, and then this is their core component, common cloud management platform. So in fact, this is the cloud platform. ठीक है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है. बाकी जो है वो तो आपकी सर्विसेज होती है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक हमने जो है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था कि ये क्लाउड की सर्विसेज है. But now we are talking about the cloud platform. So this is the cloud platform. अब इसमें इन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया. One is operational support services and the other one is business support services. So let's see each one of them. G. So now if we talk about in detail, so you can see that these the CCNP consisting of two components, OSS and BSS, they do have further many components as well, like service delivery catalog, service automation management, etc., and they are there as well. Similar is for cloud service consumer as well. So let's talk about now service development tools. So we talk about on the side of service creator. So service, you can have a service component developer, you can have service composer, and then you are going to have offering manager. So the offering manager of this from the side of cloud service creator is going to finally after creation of these services, going to hand over these services to be run over to the cloud. अब इसके लिए there are service creation tools, और उसमें मल्टीपल टाइप में सर्विस क्रिएशन टूल के लिए मेनली यू आर गोइंग टू नीड सर्विस development software या service development tools, so through which you are going to develop this service. Then you are going to create an image out of that, क्योंकि cloud based में हम क्या करते हैं, हम उनके instances या images create करते हैं. So image creation tool हो जाएगा, and eventually this वो जो भी आप सर्विस बना लेंगे, it's going to be managed through service management development. ठीक है, तो वो जो सर्विस की जो मैनेजमेंट होनी है उसको किस तरह से डेवलप करना है. सो यू आर गोइंग टू डू इट विद दिस प्रोडक्ट. अगर हम दूसरी साइड पे आए, सो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर इज देयर, सो यू डू हैव क्लाउड सर्विस इंटीग्रेशन टूल, देन यू कैन हैव क्लाउड कंज्यूमर इन हाउस IT इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये कोई प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है और कोई उसका अपना ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है. सो यू डू हैव कंज्यूमर इन हाउस IT infrastructures, in which is going to have some sort of applications, some middleware, some infrastructure, some business processes, etc. Or again with cloud service integration tool, with the help of them, they are going to communicate with this cloud service provider, and they may run some resources over here on a public cloud platform.
अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे आ जाएं तो उसमें हमने देखा जी कि 3 मेजर चीज़ें क्लाउड सर्विसेज हैं, दूसरी CCMP और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. First is you are going to have some physical servers, then you are going to have storages, networks, facilities, etc. So servers are going to require some server computers consisting of some processors, memories, nodes. Then you are going to have storages as well, in which you are going to have drives, ephemeral devices जो कि आपकी plug out हो सकती हैं. Then persistent storages. Then network की बात करें, you can have internal network, external network, inter-site network. So cloud के अंदर जब आप connect होते हैं तो cloud का एक internal network होता है, फिर आप external network के साथ भी connected होते हैं. And then cloud platforms, they do have their own network जो inter-site network कहलाता है, उनका अपना public जिस पे वो across multiple data center, across continents, they do communication. And then you are going to have some physical facilities like location, power, air conditioning, maintenance, etc. So they are going to be there. Then cloud service provider में जो cloud services हैं, you are much familiar with them now. You do have infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, and in order to run them, you are going to have some third-party ecosystem. And then with IBM, you can have business process as a service as well. CCMP की बात करें तो CCMP में in order to communicate with different layers, they do have service provider portal and API. So through which they actually communicate with these different things like service creator. If he is going to create a service, he's going to interact with the cloud again with this service provider portal or API के through इसे interact करेगा. इवन जो सर्विसेज हैं क्लाउड प्रोवाइडर खुद चला रहा है, उनके साथ भी अपना ये जो CCMP है उनसे जब इंटरेक्ट करेगा तो वो अगेन उस पोर्टल या API के थ्रू कर रहा होगा, जो APIs होती हैं उनके थ्रू कर रहा होगा. एंड सेम इज फॉर द लो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. उनके साथ जब करना है, फॉर एग्जांपल अब आपने वर्चुअलाइजेशन की होंगी, सो इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू दैट. एंड देयर आर गोइंग टू बी मेनी रोल्स हियर एज वेल. जिस तरह आप देख सकते हैं कि विद इन क्लाउड प्रोवाइडर यू आर गोइंग टू हैव सर्विस मैनेजर्स, you are going to have business managers, you're going to have deployment architects, transition manager, operations manager, customer relationship managers, security managers, customer care, etc., etc. There are so many roles in a cloud provider. So if we more drill down this thing, so we can see here that the common cloud management platform consists of two major things. One is operational support services and the other one is business support services. So business support services, they are used to work for business continuity management, and they deals with the business aspects of your cloud. And operational support services, they deals with more with the operational stuff of your cloud, means more with the technical stuff. So with the business support services, you are going to have with the operational support service, you are going to have service delivery catalog. So you are going to store all of your public service offering into this catalog, which are going to be available to your customer, which are going to be there. जो आप services offer करते हैं या इस वक्त आपने उन्हें pause किया हुआ है, whatever, वो आपके यहाँ पे मौजूद होंगी. Then service automation management, जो भी आपकी services उनको automatically provide करवाना है, उसके लिए it's been used. Then you do have service request management. This is a queuing management system जिनके अंदर जो भी आपकी requests आ रही होती हैं, you have to manage them. Against that, you have to provision those services or deprovision those services जो कि cloud की होती हैं. Then change in configuration management, पूरा जो आपका configuration items हैं जितने भी आपके सिस्टम में मौजूद हैं उनका पूरा लाइफ साइकिल है यहाँ पे, which is done through change in configuration management. Then image life cycle management, आपके जो services के images create हो रहे हैं उनका पूरा जो life cycle है उसकी management. Eventually जो automation के through आपको जो request आती है कि जब provision करना है तो specific to any instance provisioning management, it deals with different types of services and provides you the services. Then incident and problem management, very important aspect, because you are going to have
many incidents, many problems, many bugs, ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होंगी. So through this you are going to handle those. Then IT सर्विस लेवल मैनेजमेंट, तो आपके वो जो SLAs डिफाइन हुए हैं उनके लिए सर्विस लेवल्स को एश्योर करने के लिए यू आर गोइंग टू हैव सर्विस लेवल मैनेजमेंट. देन मॉनिटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, अब आप इंटरनल खुद ही मॉनिटरिंग करते रहते हैं. यू मे sees there is a problem in occurred, or through monitoring you are going to actually detect that problem, और फिर जो इतने भी इवेंट होंगे उनके अगेंस्ट then you are going to generate the incident or the problem management and you are going to handle that. Then IT asset and license management, जितने भी आपके पास IT assets हैं, जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो लाइसेंसिंग है, आपने प्रोडक्ट्स ली हुई हैं, आपके पर सीट हैं, पर यूज़र हैं, जिस तरह भी हैं, उन सब की मैनेजमेंट करना वो यहाँ पे आएगी. एंड देन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ कितनी हैं, उनके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंसेज क्या आ रही हैं. सो यू आर गोइंग टू मैनेज इट ओवर हियर. सो दे आर मोर टेक्निकल. Then comes the business support services. In business support services, you do have customer account management, service offering catalog. of offering catalog जो होती है उसके अंदर you actually put only those services जो कि ऑफर की जा रही हैं, क्योंकि कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी डाउन हुई होती हैं, रिटायर हुई होती हैं या अपकमिंग होती हैं. So they are going to be mentioned here in delivery catalog, but in offering catalog you will mention only those जो कि इस वक्त ऑफर की जा रही हैं. अब वो जो ऑफरिंग कैटलॉग की बेसिस के ऊपर क्लाइंट ने एक सब्सक्राइब किया है उसके लिए देन यू आर गोइंग टू हैव अ सर्विस ऑफरिंग मैनेजमेंट एज वेल. देन जो जो SLAs क्लाइंट्स के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता जाएगा, सो द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी देयर. देन service request management actually first comes through the business support. Once it's been done, then against this it goes to the operational support service, and operational service support then provide this service management. Then order management, then subscription management, आपकी subscription में कुछ change है, it's going to handle pricing की strategy क्या है, so pricing management यहाँ पे हो रही है. Then entitlement management, you may impose some limits or other things as well, और किसकी कितनी entitlement you can have it there. Then metering of all the cloud services, then rating of the cloud services, eventually pricing and metering की basis के ऊपर you do the billing, so the billing is there. And then billing के बाद this billing is generated and given to the customer, so the customers is going to have be dealt with the clearing and settlements. So you can have account payables and then you can have account receivables as well. So this whole is the common cloud management platform in which there are aspects related to the business support and there are aspects which are related to operational support services. So once you are going to build up platform, it's going to deal. तो ये अब आप देख सकते हैं कि सारे जो components होंगे they need to be integrated with each other और आपस में मिल के ये काम कर रहे होते हैं. And you can also see that this is quite a complex thing. It's not very simple. और ये मेजर चीज़ है या इस टाइप की कोई भी चीज़ जब भी आप जो क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, so it's going to be there along with the services. Then एक बॉटम लेयर है उसकी which is security, resiliency and consumability की. Security में you do have many different types of securities and you have to assure them. You can have security event management. अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने exactly इसी तरह, this is a reference architecture, तो आप ये exactly इसी तरह ही implement करेंगे. You can have multiple components, you can join multiple components, you can divide them into multiple components. अलग-अलग आपका हो सकता है. So it depends upon you. But this is just for reference. So you need to have a good understanding कि जी cloud के अंदर असल में क्या-क्या चीजें होती हैं. तो cloud असल में ये वाली मेन चीज है, ये वाली और ये जो आपका है ये चीजें इनको हैंडल करके आपका क्लाउड. तो ये तो वो हैं कि जो कि आप सर्विसेज उसके ऊपर दे रहे होते हैं जो क्लाइंट यूज करता है, लेकिन उस सारे को चलाने में आपकी ये चीजें काम आ रही है. So the security consists of security event management, security policies, threats and vulnerability management, and software system and service assurance, data and information protection, security entitlements, access and identity lifecycle management, governance, data policy enforcement, etc. So there are so many aspects of security. Same goes for the resiliency. Resiliency क्या होती है? Anyone? Resilient होता है जैसे हम दिखाई देते हैं. So in the case of some problems or
हमेशा still your cloud provider should not get failed. आपकी services जो provide होनी चाहिए. So resiliency provides those things like it can be data resiliency, then configuration for resiliency, resiliency monitoring analysis, resiliency compliance assessment, resiliency policy management, and then availability and continuity management. This is the main thing which actually provides you the resiliency, availability and continuity management. तो ये होती है तो आपको resiliency मिल रही होती है. It can be data resiliency, service resiliency, and then based on this resiliency compliance assessment, your audit teams can see that how much resilient your services are. Then you do have consumability. Consumability tells you that how much it's ease for the consumer to consume your services. So ease of doing the business. How does the cloud provider readily adopts? How much simplified operations are they being provided by the cloud provider? And then how good is the first experience? And then how much rapidly the things they get integrated with each other. So yeah, multiple aspects. If you see that how a cloud service is going to be provided by a cloud provider, so आपका कोई भी cloud consumer है, you can have multiple cloud consumers, and then they are going to ask for this cloud service, or along with some runtime function it's going to be provided. और यहाँ पे आपका कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसका पर्टिकुलरली कोई ऑप का स्टाफ होगा, ऑपरेशनल स्टाफ होगा, who's going to manage this thing. So it can be anything like VM as a service, WebSphere application server as a service, or web conferences as a service, etc. Anything can be provisioned there. Cloud service creation, you could steps in, जो IBM define करता है, you can have some differences as well among them. सबसे पहला जो step है, that is that the cloud service creator has to specify the cloud service description. ठीक है, तो एक creator जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, एक सर्विस को जो है वो क्रिएट करते वक्त बताएगा कि ये सर्विस की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि कौन सी सर्विस है, इसकी प्राइसिंग SLA और बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं. Then he will implement runtime functionality कि जी runtime के लिए इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और कोई वेब सर्वर चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, वो उसको उसके साथ इंटीग्रेट करेगा और फिर उसको डिफाइन. Then the third one is he has to define the unit of delivery and rating कि जी यूनिट ऑफ डिलीवरी क्या है, ये MBs में है, ये गीगाबाइट्स में है, ये पर आवर है, कंप्यूटर इंस्टेंस है तो पर आवर उसकी डिलीवरी हो रही है, किस तरीके से उसकी डिलीवरी हो रही है, या इतना रिकॉर्ड बेस्ड है, कितने डेटाबेस रिकॉर्ड्स हैं उसकी बेस पे साइज ऑफ डेटा के ऊपर किस तरीके से हो रही है. देन ही विल इम्प्लीमेंट सेल्फ सर्विस डिलीवरी एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, और अब उसमें वो बताएगा कि जी सेल्फ सर्विस डिलीवरी जो है वो कैसे होनी है, उसके लिए जो भी टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करनी है वो क्या होंगे कि जी जिसके थ्रू आप जो है ना वो सेल्फ सर्विस डिलीवरी करवा सकते हैं. देन ही इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग मैट्रिक्स एंड इवेंट कोरिलेशन रूल्स कि जी इवेंट्स जो हैं वो कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे जो है उनकी क्या कहते हैं अक्रॉस, अगर मल्टीपल डिफरेंट उनके साथ भी कम्युनिकेशन होनी है वो कैसे होनी है, प्लस इंसिडेंट या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है उसके लिए चीज़ें जो हैं वो इवेंट्स की कैसे डिफाइन की जाएंगी. अब वो जो भी इंसिडेंट या उनसे रिलेटेड चीज़ें फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा. इम्प्लीमेंट इंसिडेंट प्रॉब्लम एंड एसेट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद रेजिलेंसी SLA इम्प्लीमेंट करेगा कि इन केस देयर इज़ अ फेलियर सो व्हाट हैज़ टू बी डन, कि कोई अगर फेलियर हो रहा है तो उसकी कॉन्टीन्यूटी और अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है तो वो डिफाइन होगी. फिर उसके बाद कोई बैकअप वगैरह की अप्रोच है तो वो डिफाइन हो जाता है. रेगुलर बैकअप अप्रोच है फॉर आर्काइविंग पर्पस और इन जनरल. Then it's going to implement the security function as well because you need to provide the cloud services securely. Then वो बिलिंग मैट्रिक्स डिफाइन करेगा कि बिलिंग का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका पर आवर बिलिंग है, पर GB बिलिंग है, पर मंथ पर GB है तो वो पर मंथ बिलिंग है, वीकली बिलिंग है, पर ईयर बिलिंग है, कौन सी बिलिंग है. देन उसके लिए फिर वो मल्टीपल टाइप के रेट्स डिफाइन कर देगा
कि जी 5 GB बिलिंग के लिए ये जो इंस्टेंस है इसका ये रेट है, इतने साइज के इंस्टेंस का ये रेट है, एंड वंस ऑल दीज थिंग्स आर बीन डन is going to register cloud services to cloud catalog. So now the cloud services are ready to be deployed by a cloud consumer. The cloud consumer कोई भी will find these services into the cloud catalog and will be able to deploy these services. Okay, so this is how this IBM cloud platform works. ठीक हो गया जी. तो ये दो बड़े मेजर हैं. इसके बाद Oracle का भी मैंने डाल दिया था. Now the things are quite similar. थोड़ा थोड़ा minor फर्क है. So you can see that as well. कि Oracle ने भी अपने उसी का आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं. पहला प्रिंसिपल क्या है जी कि जी क्लाउड इंटरफेसेस एंड फॉर्मेट्स दे मस्ट कंफॉर्म टू द रेलेवेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. यस दे शुड, बिकॉज द मोर द स्टैंडर्ड्स यू फॉलो it's going to be more easy for the client to adopt your cloud services. क्योंकि उनके लिए आसान हो जाता है. Then the system must present only the information necessary to perform each specific function. तो underlying detail बताने की clients को जरूरत नहीं है, सिर्फ वो information बताएंगे तो जो कि customer को चाहिए. For example, you are going to rent a compute instance. जी 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 वालेकुम अस्सलाम. मेरी आवाज आ रही है? हेलो. जी सर, हमें तो आ रही है. अच्छा ठीक, मैंने कहा मसला. ओके जी. सो देन आर्किटेक्चर जो है उस it should provide monitoring of all aspects of resource usage. ना सिर्फ के मीटरिंग करनी है बल्कि सबकी मॉनिटरिंग भी करनी है, और चाहे वो क्लाउड प्रोवाइडर के लिए चाहिए या क्लाउड कंज्यूमर के लिए चाहिए, क्योंकि आपने एक SLA डिफाइन किया हुआ है. लेट्स से आपकी क्लाउड सर्विस जो है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रही, तो हो सकता है कि क्लाइंट आपको ना बताए, लेकिन आपके लिए जो है वो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जो है ज़रूर मॉनिटर कर रहे हैं. उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये, जैसे आपकी इवन PTCL की बैंडविड्थ है और एक कंज्यूमर है उसको सिंपल इंटरनेट वैसे ही चाहिए होता है, इज नॉट मच कंसर्न अबाउट कितनी ज़्यादा स्पीड है, इज यूजिंग लेट्स से 8 मेगाबिट्स पर सेकंड. सो दैट मे बी ओके फॉर द कस्टमर अगर 4 MBPS भी आ रहा हो, लेकिन एक दूसरे कस्टमर के लिए अगर वो 6 MBPS भी हो जाता है तो दैट मे बी अ क्रिटिकल पॉइंट. तो इसलिए क्लाउड प्रोवाइडर ने खुद भी मॉनिटरिंग करनी है. देन क्लाउड प्रोवाइडर का अगर कोई क्लेम लाइक रिलायबिलिटी या जो अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कोई भी क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो पैरामीटर है, अगर इफ द क्लाउड प्रोवाइडर इज मेकिंग एनी क्लेम कि लेट्स से दिस इज 99.9% अवेलेबल, सो दैट शुड बी वेरीफाएबल. there needs to be evidence which needs to be provided for against any claims which is being made by the cloud provider. And then availability should not be limited by inevitable hardware failure. So let's say if there is a hardware failure, cloud provider जो है उसको उसकी वजह से फेल नहीं हो जाना चाहिए. ठीक है. Then if we see in detail, so they say there needs to be a robust identity domain separation, और आपके जो आइडेंटिटीज़ हैं हर कंज्यूमर की वो सेपरेट होनी चाहिए. और अगर किसी भी कंज्यूमर का कोई एक्सपोजर हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, लेट्स से कोई अटैक हुआ है किसी की वेबसाइट पे, तो उसकी वजह से आपका क्लाउड पे या दूसरे कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. और क्लाउड का जो आर्किटेक्चर है इट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कंट्रोल्ड. आपका जो कंज्यूमर है he needs to have the visibility of the abstract design and operation of the system. लेकिन ये कि नीचे अंडरलाइन डिटेल नहीं है उसको ज़रूरत है. देन क्लाइंट की जो प्रोडक्टिविटी है नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. सो इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी शुड बी देयर. अगर प्रोडक्टिविटी क्लाइंट की इम्प्रूव नहीं कर रहे और आप सिंपल उसको सर्विसेज दे रहे हैं तो क्लाइंट इज़ नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू यू. तो क्लाइंट की एफिशिएंसी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी उसकी time to market, time to acquire the resources, services, it's very fast in case of a cloud, वो definitely leverage होता है. और दूसरा in terms of cost भी इसको benefit मिलता है. So then it's good. Then assure data protection because there are multiple tenants there, so the client's data needs to be protected from each other.
Okay, and it needs to be conforming to the any standards or regulations set by the governments or the local governments or even the foreign governments, क्योंकि दूसरे भी countries से भी आपके customer हो सकते हैं. Then operations they need to be automated as well. ठीक है, तो आपके जो जितने भी business processes हैं, जितनी भी चीजें हैं, they needs to be automated. So ये उसका एक conceptual overview है. They define it with a different perspective, एक logical view और एक conceptual view है. जो conceptual view you can see it's quite similar to the previous two, and you can see here three major roles: cloud consumer, cloud provider and cloud broker. ठीक है जी. Again cloud जो consumer है उसको through some access infrastructure, through some APIs you access this. वही 3 level of services, saas, paas और iaas. उसके नीचे आपकी वही जिस तरह उसमें थी resource control and abstraction layer, यहाँ भी resource abstraction layer है. So you do have physical compute, storage and others, and all these things which are being abstracted. So you get these compute, storage and others as a virtual resources, and then you have physical computing resources and some other facilities. So physical resources you do have blade servers, some disk and other stuff, and in physical resources you have some buildings, utilities, coolings, etc. And then you have this component जो जिस तरह IBM में CCMP था, तो यहाँ पे भी क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. एक आपने देखा कि जी था ऑपरेशनल सपोर्ट सर्विसेज, दूसरा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. सिमिलर टाइप की चीज़ यहाँ भी है, क्लाउड बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाउड ऑपरेशन, एंड देन कुछ कंपोनेंट्स को उन्होंने अलहदा कर दिया. वन इज़ ऑर्केस्ट्रेशन, कि वो जो आपने प्रोविजन करना है, सर्विसेज देनी है, तो उसको ऑर्केस्ट्रेशन कह दिया. Then security policy, security and policy management है, क्योंकि security is enforced on top of all the services, तो यहाँ पे आ गया. And then design time is for the designing of all those. Then cloud broker side पे cloud brokering है और cloud management, ये 2 components हैं. Logical view से देखें तो ये 3 layers में divide करते हैं इनको. एक है resources की, दूसरी है services की, तीसरी है access की. ठीक है, तो ये जो cloud management है, ये सारी चीज़ें ये आपके इसमें आ जाती हैं जो कि आपकी सर्विसेज की लेयर है. उससे नीचे रिसोर्सेज की लेयर है. तो रिसोर्सेज में आप देखें तो यू डू हैव फैसिलिटीज, यू हैव फिजिकल पूल्स एंड यू हैव लॉजिकल पूल्स. ठीक है, तो फिजिकल पूल्स में यू हैव सर्वर्स, ब्लेड्स, डिस्क, एवरी अदर थिंग, एंड देन इन द लॉजिकल पूल्स यू हैव लॉजिकल कंप्यूट इंस्टेंसेस, नेटवर्क्स, वर्चुअल नेटवर्क, स्टोरेजेस एंड अदर्स, एंड देन यू ऑफर दीज थिंग्स एज अ सर्विसेज ओवर द क्लाउड. और यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में इसी तरह यू डू हैव, या आगे डिटेल थोड़ी सी आ रही है, चलो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ. तो you do have customer contracts, revenue management, operational service life cycle management, security and policy management, and design time. Or at the top you do have access, in which you have network. So you have networks through which you are accessing these things, like you do have proximity, perimeter security, naming, domain name servers, you're naming servers, etc., and load balancers. And then you do have interfaces, the APIs, through which you actually access all these things. So you are going to have different types of probably portals, some scripting based, some native protocols, some UIs, some APIs, through which you are going to access this cloud. So cloud management capabilities, if you see, you have again cloud operations. So cloud operations के अंदर you have service management, life cycle management, performance management, configuration management, along with monitoring and other things as well. So you can see in detail that there is service definition, service forecasting, metering, service level authoring, service discovery. Then life cycle management में जब service provision होगी तो provision management, capacity management, patch management, etc. Then in performance management में you do have service level management, diagnostics, business services, problem incident reporting. Then in configuration management में you do have asset management, asset discovery, knowledge management, release management, etc. ठीक हो गया जी. और इनके साथ फिर जो है ना यूजर की इंटरेक्शन मोड्स हैं, लाइक सेल्फ सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डैशबोर्ड्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, क्वेरिंग है, रिपोर्टिंग है, पॉलिसी व्यूअर है. Then on the other side, you do have security and policy management, in which you have identity management, entitlement management, risk analysis, delegated admin, certificate management. Then security services like authentication, authorization, auditing, accounting, federation, encryption. Then policy management,
orchestration is very important, workflow management, mediation, event processing, and then design time, in which the main thing is your model management, in which you are doing all the things related to the model, like model design, model introspection, validation, deployment, package, federation. So based on these design, you are going to deploy new services as well. ठीक है जी, तो ये Oracle ने फिर अपनी एक प्रोडक्ट मैपिंग की हुई है दिस ऑर्डर ऑफ स्कोप के जी। अगर आपने जी सास पोर्टफोलियो पे जाएंगे सो Oracle gives you these things, Oracle Fusion Financial, CRM, etc. etc. There are many things. Or this is their another product mapping, and it's finished. That's all for this module. Thanks for watching.